Good evening to all of you. Is this audible? Visible to everyone? Am I clear? All clear? सुनी पारुछन्ति समस्ते? तो आज बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छी डिस्कशन करबा हमें. यस. प्रणाम अभिजीत, सस्मिता, जॉइन कले समस्ते. Any doubt from last class? Any doubt from last class? चलो तो आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन अच्छी. डिफिकल्टी लेवल हाई थिबा वाला किछि क्वेश्चन अच्छी आज डिस्कशन करबा. क्वेश्चन को आसीबा. तो क्वेश्चन को आसीबा पूर्व गोटे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन समस्त को पाई. जदि कौन सी इम्प्रूवमेंट रिलेटेड आपण मानकर फीडबैक अच्छी मे बी रिलेटेड टू पेड कोर्स, मे बी रिलेटेड टू दिस यूट्यूब कोर्स बा कौन सी क्लास रिलेटेड, ताहले आपण माने आपण मानकर मतामत शेयर करि परिबे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो लिंक अछि, से लिंक को यूज करि कि कहि परिबे. ठीक अछि. डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो लिंक अछि, से लिंक को यूज करि परिबे समस्त. सो आज रो टॉपिक अछि नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ऑन नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. ये सब आम डिस्कशन करबा. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छी किछि डिस्कस करिवे आपण मानक सहित. सो बिफोर दैट किछि बेसिक कांसेप्ट को रिवाइज करबा, तापर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बुझिबा. फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज कोन कहली. फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज. देखो क्वेश्चन देखो समस्त सामने स्क्रीन में अच्छी क्वेश्चन समस्त देखि परिवे. बी. ओके. आउ किछि कालिया बी कहउछ अन्य माने. आउ किछि क्वेश्चन, आउ किछि सॉरी, आउ किछि आंसर. एनएनपी आमे पढिथिले पूर्वरु नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. कौन कहली. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. आकु ही कहउछ आमे दिस इज नोन एज नेशनल इनकम. कौन कहउछ दिस इज नोन एज नेशनल इनकम. इज दिस क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन को आसियो. व्हिच इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. पढै छि मु ई क्लास रे डिस्कशन करिछि, यूट्यूब क्लास रे डिस्कस करिछि, वन शॉट सीरीज रे डिस्कस करिछि, पेड क्लास रे भी डिस्कस करिछि, प्लेटफॉर्म रे डिस्कस करिछि. सो सिंपल क्वेश्चन सब जगह ये सब डिस्कशन करा जाय छै. ए क्वेश्चन गुडी आंसर दवा चेष्टा करियो. व्हिच इज नॉट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. तीनटा मेथड था, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड. बट इन्वेस्टमेंट मेथड बोली किछि नाही हम पाखरे. कोन बोली इन्वेस्टमेंट मेथड बोली किछि मेथड हम पाखरे नाही. नेक्स्ट, the organization that publishes national income statistics in India is called. को ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रे नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करे. नमस्कार प्रियव्रत. CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ना. The Human Development Index does not include HDI. कुछ HDI does not include को फैक्टर को या भीतर HDI include करू नाही.
कौन कहली को फैक्टर को एचडीआई आ भितर इनक्लूड करूना समस्ते कहीपर एचडीआई रे केतेटा फैक्टर थिला तीनोटी फैक्टर थिला एचडीआई रे ओटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सो पॉवर्टी रेट इट इज नॉट देयर पॉवर्टी रेट इज नॉट देयर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा एटा को यूज करथले कोन पई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पई ना तीनटा फैक्टर थिला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेल्थ एंड एजुकेशन ये तीनटा फैक्टर थिला एट बुझछन कि नै मो कथा fourth factor poverty rate it is not there. Next, economic development is best measured by, and the question is on economic development. Question is on economic development. Economic development is best measured by which of the following factor? GDP, HDI, GNP, net national income. Net national income. Five D. This is for net national income. Very good. No, ये डेवलपमेंट पदार्थ ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉट ग्रोथ सो डेवलपमेंट इज बेटर मेजर्ड बाय एचडीआई हां कि नहीं डेवलपमेंट टा की मेजर करूची डेवलपमेंट इज बेटर मेजर्ड बाय एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बुझ परछो कि नहीं which of the following is not a component of HDI per capita income literacy rate infant mortality rate life expectancy at birth not included reach देखी करिवे ठीक भाବରେ yes प्रियव्रत HDI कल्पना एटा कोन हबो और HDI रे ये कुछ आ भीतर कोटा नाही कोन ये कुछ which is not there in HDI रे कोटा नाही per capita income literacy rate infant mortality rate life expectancy at birth per capita income ta it is related to your standard of living literacy rate is related to education है life expectancy at birth it is related to health ना एई फैक्टर टा नहीं infant mortality rate कोन अछि HDI infant mortality rate नहीं real national income is measured by at number real national income is measured by very good evening Manoranjan
national income at current price, base year price, market price, factor cost. को price रे कले हो base year price is always put. Now what is base year price and current price? Current price रे कले कौन कहते base year price रे कले आपको हमें real GDP. अब current year price रे इटे कौन ना this is nominal. Current year price रे कौन ना nominal GDP है ला. Next. Which ministry is responsible for report of national and per capita income in India? National and per capita income in India. Which ministry is responsible for this? क्विक रेस्पॉन्स देवे समस्ते कहि परिवे बहुत सहज क्वेश्चन यस वेरी गुड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन statistics and program implementation. Then next Lawrence curve is used to measure Lawrence curve is used to measure Lawrence curve कौन पाई यूज हुए कौन मेजर करे it measures income inequality नुहे की it measures income inequality. Physical quality of life index, it includes per capita income, life expectancy at age 1, literacy rate both B and C. Physical quality of life index. समस्त प्राय तो कहते बी एंड सी किए कहते खाली बी so life expectancy at age 1 plus literacy rate B and C. Inclusive development refers to what is inclusive development? What is inclusive development? Inclusive development refers to only social inclusion, only employment generation, both social inclusion and employment generation, only economic growth. Social inclusion and employment generation. And HDI was developed by which organization? Human Development Index. It is developed by which organization? United Nations Development Program. Next question. टिके difficulty level high करूची है statement based question. Statement important नुहे माने कष्ट नुहे rather एटा कष्ट कोडा जो गुडा ऑप्शन दिया जाय से गुडा कष्ट. Consider following statements regarding net national product NNP. NNP is always higher than GNP. NNP includes net factor income from abroad. NNP includes net factor income from abroad. A only 1, B only 2, both 1 and 2, neither one not.
ध्यान देकी करिवे। NNP is always higher than GNP ही परिवो। Now what is the relationship between GNP and NNP? What is the relationship between GNP gross national product and net national product? GNP minus depreciation is equals to NNP. So NNP टा केमती higher होगा? NNP will be lower, नहीं? NNP includes net factor income from abroad. Yes, national product अच्छी माने इटा आसी कोड GNP रु GNP टा कोड आसिला GDP रु आसी ना इटा कोड आसिला GDP रु आसी तो इटा सेमती NDP रु आसी NDP plus net factor income from abroad ये तो NDP रे net factor income का ना national अच्छी माने net factor income रा include होई गयो बुझी बुझी ना नहीं so B is correct. What is the correct answer? Only two. One is not कहीं के ना NNP will be less than GNP इटा बुझी पाले ना बुझी पाले देखो केते ट्रिकी क्वेश्चन बुझिया को चेष्टा करन देखंतु केते ट्रिकी क्वेश्चन ये एई कॉन्टेक्स्ट रे मोर आ गोटे क्वेश्चन एनडीपी रो मते दरकार जीएनपी कोन करिवि एनडीपी रो मते दरकार जीएनपी कोन करिवि कोन कले मते एनडीपी रो जीएनपी मिल जिवो कोन कले मते एनडीपी रो जीएनपी मिल जिवो कोन सब्ट्रैक्ट करबो कोन कोन चेंज हेची प्रथमे देखियो सबल कहिची एटी नेट रु हेची ग्रॉस कोन जेटा नेट रु ग्रॉस हेची देन डोमेस्टिक रु हेची नेशनल एती कथ नेट रु ग्रॉस हेले कोन करिया पड़ियो ग्रॉस रु नेट हेले सब्ट्रैक्ट करथला डेप्रिसिएशन नेट रु ग्रॉस हेले प्लस करिवो डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक रु नेशनल हेले कोन हबो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो डोमेस्टिक रु नेशनल हेले कोन हबो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो मो कथा बुझियला सिंपल जिंस ये सस्मिता एब्सोल्युटली करेक्ट next with reference to measurement of national income which of the following statement is correct the value of intermediate goods is included to avoid underestimation true or false intermediate goods national income रे intermediate goods कैलकुलेट करा जाए ना केवल फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करा जाए second self consumed output in rural household is excluded from national income computation ठीक है भाभी करिए मन देख ठीक हबो मन देख करंतु
value of intermediate goods is included to avoid underestimation. No, this is excluded, only final goods are calculated. Self consumed output in a rural household is excluded from national income computation. केमती तो हम थर्ड मेथड नहीं थे कैलकुलेशन करिवार. व्हाट इज द थर्ड मेथड? थर्ड मेथड नहीं नथिले कंजप्शन मेथड जोटा हां कि नहीं. Third method is consumption method. So neither one nor two. Next, GVA. Gross value added at basic price differs from GDP at market price because important. This is the difference between gross value added and GDP at market price. A correct. A ठीक अच्छे. Next, regarding HDI Human Development Index, it is calculated using arithmetic mean of normalized indices for 3 dimensions. Life expectancy at birth is used as the health dimension indicator. कौन हो? Government option all. It is calculated by using arithmetic mean of normalized indices for 3 dimensions. Life expectancy is used as the health dimension indicator, which is correct. Both correct. ठीक है. Both correct. Statement 1, increase in absolute and per capita real GNP always implies a higher level of economic development. Statement 2, economic development must account for reduction in poverty, unemployment, inequality, which is true. Market price रे tax include ना Susmita. Factor cost plus net indirect tax equals to market price. बुझिला? कौन बेटा? Increase in absolute and per capita real GNP always implies higher level of economic development. Increase हेले इटा सबले economic development देखेबो कि gross national product. Statement 2, economic development must account for reduction in poverty and all those socio-economic disparity. Uda. First, second, or both, or none of these. Yes. Correct. So it answer कौन होगा? Answer उची. इटा ठीक है. First option, first statement is wrong. Statement 2 is correct. Are you finding statement 2 as correct? हाँ कि नहीं?
हाँ कि नहीं स्टेटमेंट 2 टा ठीक अच्छी कि नहीं समस्त कहबे एब्सोल्युटली ठीक अच्छी कहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जदि पॉवर्टी मालन्यूट्रिशन हंगर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर बी है फाइनल ठीक अच्छे चलो बी फाइनल है ना चलो बी है फाइनल गोटे शॉर्ट को आसवा व्हाट इज नोन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स मैक्रो माइक्रो इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स this is micro individual units are micro what is the main cause of all economic problems कौन हम mean all economic problems all economic problems next when did the great depression occur start when did the great depression occur এটা भी करिवे समस्त आखि बंद करी 2930 father of modern macroeconomics कोइटा कोन is there any confusion in this question देखो केते simple question still there is confusion अंगे एटा सिंपल अछि ना कष्ट अछि ए क्वेश्चन ना मते कहलो ए क्वेश्चन ना सहज अछि ना कष्ट अछि
Correct answer is Kennis, JM Kennis. Hela. Eta ko study of aggregate is known as अमित इजी अच्छी नहीं इजी अच्छी इजी क्वेश्चन भी देखो केते जनकर भूल है कहबार अर्थ macro next now Mr. ASK wants to study national income ताले कौन पढ़िया को पड़ियो which branch he has to study which branch he has to study D next general price level is studied in पूर्वटा कौन है macroeconomics now general price level is studied in एटा भी करि परिबे समस्त what is this called general price level टा कोथरे थाए is in macro नहीं okay next employment theory is related to it is confusion between macro and micro how confusion is between macro and micro macro macroeconomics studies ठीक अच्छे करेक्ट macro no number macro number गुडा का आगे पछ हो जाई macroeconomic studies macro micro भीतर कौन डिफरेंस देखले micro is a narrow concept macro it is a broad concept in macro we talk about whole of the economy in micro we talk about limited things maybe by your factory maybe by a business unit how to increase or how to decrease profit loss yes macro is all about employment opportunities it is all about employment opportunities in the economy next branch of economic theory which deals with problem of allocation of resource related to problem of allocation of resource because economics is all about resource it is all about the scarce resource what is this is macro econometrics
बी नहीं ए हम आंसर इज ए माइक्रो कौन कहले आंसर कौन आंसर होची ए माइक्रो नेक्स्ट a study of how increase in corporate income tax rate will affect the natural unemployment rate in an is an example of Amit. Is everything okay? I think you little bit offset. No, no, not offset at all. Fine, all okay. তাহলে এটি কোন হবো কর্পোরেট ইনকম ট্যাক্স নাও নাও এটা গোটে মেন্স রিলেটেড বহুত ইম্পর্টান্ট টপিক ইম্পর্টান্ট কোশ্চিন মধ্য মেন্স পাই না গভর্নমেंट অফ इंडिया কোন করছ না কর্পোরেট ট্যাক্স টাକୁ রিডিউস করি আসুଛି গ্রাজুয়ালি বহুত দিন হেগলা সো যাহা ফଳରେ গভর্নমেंट ର ইনকম ট্যাক্স কমি যাଉଛି গভর্নমেंट ର রেভিনিউ কমি যাଉଛି যদি গভর্নমেंट ର রেভিনিউ কমি যায় অটোমেটিক্যালি গভর্নমেंट এক্সপেন্ডিচর উইল বি রিডিউস এবং গভর্নমেंट এক্সপেন্ডিচর কোড রিডিউস করুଛି গভর্নমেंट এক্সপেন্ডিচর রিডিউস করুଛି হেলথ আর এডুকেশন health expenditure reduce कर दउछि এবং education expenditure टाको reduce कर दउछि which is a problem so it is a violation of social justice as well now it can be a topic from social justice can be a topic from economics and social development ठीक है so एरार आंसर कोन हो a is the correct answer next बुझी पारिले कि नहीं समझते next in which type of economy do consumers and producers make their choices based on market force of demand and supply market force रो कथा आसुची एटी ताले एटी कोन लिखिबा when it is about market force डी मार्केट इकोनॉमी गोटे देखथिला हमें मार्केट इकोनॉमी आ गोटे देखथिला हमें कोन सोशलिज्म नहीं आ गोटे देखथिले सोशलिज्म थिला सोशलिज्म इज ऑल अबाउट अच्छा लासेस फेयर ता कोडी थिला मार्केट इकोनॉमी इन मार्केट इकोनॉमी देयर वाज लासेस फेयर नो कि मार्केट इकोनॉमी रे थिला लासेस फेयर नेक्स्ट ए क्वेश्चन देखो ये माइक्रो एवं मैक्रो भीतर डिफरेंस कोच this question shows a difference between micro and macro देखो इट साइड ही जाउछ माइक्रो और मैक्रो भीतर ये डिफरेंस कोन देखौछ देखो micro is study about behavior of individual macro is study about economy as a whole कोन हो both correct or only one correct or two correct कोन हो गवर्नमेंट ऑप्शन कोन मिट both correct नहीं next what easy question देबी next question is very easy producer of stainless steel
which country, which state, sorry, which state is largest producer of stainless steel? ना कहिदेबे समस्त आखि बंद करी कौन अछि ओडिशा. Okay. Next, transfer payments are made. Yes, China top, second is India. Transfer payments are made. What is transfer payment? What do you mean by transfer payment? Again, national income ro question. बुझी होउची कि नहीं एक नंबर कथा दुई नंबर कथा भल लागुची कि नहीं इकोनॉमिक्स फर्स्ट क्लास रो कहितली इकोनॉमिक्स मु इजी करेबी एग्जांपल हला जणे जॉब करूची हला जॉब इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी से किसी काम कला व्हाट इज दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी ता बदल रे सी सैलरी पाइला ठीक अछि है आउ जणे किसी जॉब करूनी मु कोई पेंशन पाउची स्कॉलरशिप पाउची स्कॉलरशिप पाउची सो देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो एई जगह रे ता कोन कहउछन ता कहउछन टीपी ट्रांसफर पेमेंट कोन कहउछ दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट विदाउट एनी ताले कोन हो विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिना नेक्स्ट प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड को आउ कौन कहा जाए प्रोडक्ट मेथड इज आल्सो कॉल्ड सिंपल क्वेश्चन वेज हबनी जो आंसर दे लिखु सही वेज सैलरी पेंशन हबनी वेज आउ सैलरी हबनी पेंशन हबो केवल से है नॉट एटा जोड़ा लिखिछ प्रीति टू वर्कर्स ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर सेटा हबनी विदाउट एनी एक्टिविटी तो किछि काम करू नाहंती बट गवर्नमेंट हमको पेमेंट करछि तो गवर्नमेंट केते बेले पेमेंट करे काम करू नाहंती बट गवर्नमेंट पेमेंट करछि गवर्नमेंट केते बेले पेमेंट करछि ना गवर्नमेंट पेमेंट करछि पेंशन ने प्लस गवर्नमेंट पेमेंट करछि गवर्नमेंट पेमेंट करछि कोतरे स्कॉलरशिप रे सो दैट इज ट्रांसफर पेमेंट बुझिला अमित जहाँ भी अच्छे क्वेश्चन एट द एंड पचारिबो नो प्रॉब्लम एंड रे पचारिबो प्रोडक्ट मेथड इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किछि नाही सेटा तो गला ट्रांसफर पेमेंट ता गला एटा कोन हो प्रोडक्ट मेथड ता कोन कहआ जाय also called value added method. Next, output minus value added is called output minus value added is called
यस प्रीति करेक्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन यार एग्जांपल आमे नहीं थिले बुझिचे कि नहीं एग्जांपल नहीं चे पूर्व एग्जांपल कौन देथिली मन कर आमे गोटे केक ते देखुथि तार मार्केट प्राइस हला 100 टका ताको तयारी करिया खर्च होई मन कर व्हीट 40 रुपीस इलेक्ट्रिसिटी 10 रुपीस सुगर 10 रुपीस तो टोटल हला केतना 60 रुपीस ताले वैल्यू एडिशन एटी 100 रुपीस रो वैल्यू एडिशन केतना 40 रुपीस रो वैल्यू एडिशन केते रो ना वैल्यू एडिशन 40 रो so this is the output is 100 value addition 40 output hela kete 100 minus value addition hela 40 it will give you 60 rupees which is the intermediate consumption hela next structural change refers to structural change refers to केतोल देखिए कोन शिफ्ट इन प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू टर्शियरी नाउ इटा बारंबार मु डिस्कस करछि कहिछि क्लास it is all about shifting from primary to secondary or primary to tertiary ठीक अछि ना ना ए हलानी मनोरंजन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू टर्शियरी परिबो हैला next which of the following represents the national income of a country for a given period simply it talks about definition of national income देखो कोटा हो ठीक रे पढ़ो ठीक हो न पढ़ले ठीक हो yes what is national income रे हम कोन देखुथले जीडीपी ना सिंपली मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड केते दिन भितरे money value of all final goods and services produced within kete yes accounting 1 year नहीं सेटा कोन कहबो one financial year कहबो कहिथिले ना कोन कहिथिले in one financial year कहबो ना financial year टा कोड आसीबो कोड स्टार्ट हो कोड एंड हो कोड स्टार्ट कोड एंड एग्जांपल मु कहबी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तो ये स्टार्ट हो कितना 1 अप्रैल 2025 रु एंड हो कितना 31 मार्च
2026 हाँ कि नहीं? यस। व्हिच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय फैमिलीज टू फार्म? नेशनल इनकम पढ़ला बेले कहिते नेशनल एटा बुझी परछ तो कोड आसुची क्वेश्चन क्लास रो ही क्वेश्चन क्लास रे हमें जहां पढ़ीचे गत मासरे जहां भी हमें क्लास करथिले तारी ऊपर क्वेश्चन दउछ सेही टॉपिक ऊपर and that to basic questions just to refresh what we have discussed in the class. On land, labor, capital and entrepreneur चारिटा जाक जिनस कौन होची land, labor, capital and entrepreneur simple. Next, why are intermediate goods not included in national income while measuring it? Intermediate goods को कहीं की यूज करा जाउनी? Just to avoid double counting. To avoid double counting है the term economic growth is explained by structural changes in the economy, increase in per capita income, increase in per capita production, increase in per capita income, all of this. ठीक है छोटो ये यू कैन जूम इट यदि क्या देखा जाऊन ताल जूम कर पारे गवर्नमेंट ऑप्शन डी समस्ते डी कल्पना राजलक्ष्मी सस्मिता लिकू मनोरंजन प्रीति अमित डी ऑल ऑफ दिस है कौन बेटी ऑल ऑफ दिस. Which of the following scenario explains economic development? Improve in distribution system, improvement in technology, improvement in production. Notification आसुनी क्लास टाइम सब्सक्राइब करिछ नोटिफाई करिछ मतलब आसुची तथापि आसुनी देखिबा कोन जानिलो तो क्लास 9 टार अछि 9 टार जॉइन करजु ठीक अछि नाउ कालीर क्लास आजि देखै दबो ताकू नोटिफाई कर दबो नोटिफाई मी क्लिक कर दबो नाउ एटा कोन हबो डेवलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डेवलपमेंट सो सब गुडा को मिसेइले ताको हम कहूचे कोन ना डेवलपमेंट ठीक अछि which of the following is non economic factor of growth non economic factor of growth ideal legislative structure collection of natural resource growth of overall population in course of time capital accumulation non economic factor माने इकोनॉमिक सहित तार किछि रिलेशन नाही एटा तुमे जूम करि परियो कोथरे फोन रो भी जूम करि परियो
छोट लगुच है A legislative structure ta kono it is a political factor, it is not an economic factor, not an economic factor. Next, Adam Smith advocated for laissez-faire, invisible hand, free trade policy, competitive market, which is correct. Now Adam Smith ki he is the father of economics, but capitalism, he is the propounder of capitalism, no ki propounder of capitalism. He advocated for all. Yes, all is correct. ठीक अछि. Which of the following sector was major contributor to GDP during British rule in India? Question देखो, during British rule किए थिला major source of national income? एटा करि परिबे समस्त, किछि कष्ट क्वेश्चन नै, बहुत सहज क्वेश्चन. प्राइमरी सेक्टर जदि मो क्वेश्चन चेंज कर देबी कहि वर्तमान किए, ताले यदि क्वेश्चन चेंज करके कहि वर्तमान किए, व्हिच सेक्टर, करेंटली व्हिच सेक्टर, ताले कोन हो? सर्विस. ठीक अछि. ताले एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ताले आज मोस्टली हमें कोन डिस्कशन कले, बुझिए गला सब जहां जहां पढैली और जहां में डिस्कस करे सब बुझिए गला क्लियरली. आज हम देखले नेशनल इनकम, ई रिलेटेड टॉपिक एवं ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई रिलेटेड टॉपिक. ठीक अछि. यस, पीडीएफ मिली जीवो टेलीग्राम रे, डोंट वरी. पीडीएफ टेलीग्राम रे 100% मिली जीवो. ऑल क्लियर? गुड. Then let's wind up this session. Now जाचे हमें next class रे पुनी आसंदा कल डिस्कस करिया. That's all for this session. Thank you everyone. Thank you very much. Good night. Yes, काली क्लास अच्छी, काली क्लास हबो कल्पना, काली क्लास अच्छी.